Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jyamudire. Tato Jyamudire. Nastavaisya Bhagavesya. Nastavaisya Bhagavesya. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Uttamastake. Bhagavate Uttamastake. Bhakti Bhavtanastake. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisance unto the personality of Godhead, Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vyasadeva, the author. We'll translate Maharaj today. We'll translate. Yeah, that's good. Yeah, it's next one. By regular attendance on the class of the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all the troubles unto the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. We will read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 16. First, the Sanskrit. So. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Take it as it. So, Maharaj Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, verse 16 से पढ़ेंगे. Yeah. So we don't have it on the screen. Everyone is on the phone. They will decide, Maharaj. You can open in your phone. Who is this projector? Who takes care of projector? Putting the projector and setting it up. How many of you have it in mobile? Just go on Google and type 1.1.16. 1.1.16. You'll get the verse. 1 to 16. 1 to 16. 1 to 16. First canto, second chapter, 16th verse. 1.2.16. You just type on Google, you will get the direct verse. How many of you are able to find? Okay, so share with the devotees nearby you also. So if you can repeat. Susrusosya dadanasya Vasudeva kataruchi Syanmahat sevaya punyapipram punyatirtha niveshana
Sushushosha dadanasya Vasudeva Kataruchi Shammat Sevaya Vipram Punyatirtani Shivanat Sushushosha dadanasya Vasudeva Kataruchi Shammat Sevaya Vipram Punyatirtani Shivanat. Someone wants to repeat. Sushushadadanasya Vasudeva Kataruchi Syanmat Sevaya Vipra Punyatirtani Sevanat. Sushrushoshradhanasya Vasudeva Katharuchi Shanmat Sevaya Vipra Punyatirthani Sevanat. Sushrushoshradhanasya Vasudeva Kataruchi Syanmat Sevaya Vipra Punyatirtani Sevanat. Okay, word for word translation. So. One who is engaged in hearing. Shadadanasya. With care and attention. Vasudeva. In respect to Vasudeva. Kata. The message. Ruchihi. Affinity. Syat. Is made possible. Matsevaya. By rendering service to the pure devotees. Vipra. O twice born. Punyatirtha. Those who are cleansed of all vice. Nishevanat. By service. Translation and purport by Abhaychara Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O twice born sages, by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण हो, रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। So we will go to the purport, but I read one paragraph, you translate one paragraph, and then I do the next one, 3 paragraphs. The conditioned soul of a living being is caused by its revolting against the Lord. There are men called Deva or godly living beings, and there are men called Asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita, 16th chapter, a vivid description of the Asuras is given, in which it is said that Asuras are put into a lower and lower status of ignorance, life after life, and so sink to lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of God. These Asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as powerful incarnations of the Lord,
as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is blasphemy against, declared by the Asuras, and the demoniac followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतम अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक ग्रंथ शास्त्रों से पुष्टि ना हो तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। The servants of God are also to be respected as God by devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to the particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears and his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. वास्तव में जो भक्त भगवत नाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह ही बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में मानते थे, वे ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। So the servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord
and are very dear to the Lord. The Lord declares in Bhagavad Gita 1869 that no one is dear to him than one who risks everything to please his glory. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। Om Jnanatimanasya Snasna Shlakya Sakshrimritam Yena Tasmai Shigurave Namah Chichaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swamrapkadamyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shiru Shiyuda Padkamlam Shigum Vaishnavam Sha Shri Rupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savdutam Parchana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivshakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sinudina Bandhatyat Pate Kopesha Kopka Kantara Adakant Namastate Tapta Kansna Gaurangi Radhe Vindavaneshwari Vishabhanu Sutadevi Pranamama Haripriye Vancha Kalpta Visha Kripa Sinmai Visha Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavani Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswata Devi Gaurvani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarani. So yesterday we spoke about the importance of understanding that we are a spiritual. कल हमने शाम को चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, हम आध्यात्मिक चिन्मय स्वरूप है भगवान के अंश के रूप में हम चर्चा कर रहे थे। One of the first instructions Lord Krishna gives to Arjuna in Bhagavad Gita is Natvevam Chatunasham Nacham Natvevam Chatunasham Naman Tveshen. Natvevam Chatunasham Natvam Nevachanatipa Nashevna Bhavishama Savavayamata. Krishna says to Arjuna, all these kings here on the battlefield, you, all these kings and me have existed in the past, are existing now, they will never cease to exist in the future. भगवान भगवद गीता में सर्वप्रथम उपदेश देते हैं अर्जुन को, न तो एवं जातु नाशि न तो एवं जनाधिपा न चैव न भविष्यमा सर्व इदमतः। किस प्रकार से ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन और मैं
So Krishna gives us the good news. We are eternal. तो कृष्ण उनको गुड न्यूज देते हैं। Is that not good news? क्या ये सही अच्छी न्यूज नहीं है? Yes, it is. हाँ ये है। In the next verse he gives the bad news. Dinasmin chatade kamram chavram chatatati antaya bhaktir dhyasthatranamuyati. So that your body, Arjuna, is changing from boy to youth to old age. And you must tolerate all these changes up to the point of death. तो पहले श्लोक में अच्छी न्यूज देते हैं, दूसरे में बैड न्यूज देते हैं। वो बोलते हैं कि किस प्रकार से कि बार बार शरीर चेंज करने की वजह से आप भूल जाते हैं ये जो मतलब जो ज्ञान है अपने बारे में, और मुझे ध्यान रहता है। That's the first instruction Krishna gives in Bhagavad Gita. Matra spastkantya sitisnasika dukkadagama prina natyastam stiksasvabhavta. Just tolerate all these changes, Arjuna, of the body, like one must tolerate the heat in the summer, of the cold in the winter. तो अर्जुन को यहाँ पे प्रथम उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण की, ये जो भौतिक जगत के जो चेंजेस हैं उसको सहने की आदत डालो, सर्दी गर्मी, तो इस तरह से प्रथम उपदेश देते हैं। Because then yamina pyatatantite purusham purushashabam samudukaskam dhyam sumitatva kalpita. If you can tolerate this, Arjuna, you are ready for liberation. तो अगर अर्जुन आप इन जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव है उसको सहन कर लेते हैं, तो आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। So Bhagavad Gita directs us toward attaining this liberation. भगवद गीता हमें मुक्ति का मार्ग प्रदान करने के लिए प्रशस्त करती है। To get back our eternal spiritual body. हमारा आध्यात्मिक स्वरूप का, हमारा शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने के लिए। But to attain this, we must first understand who we are. अगर हमें ये वास्तविक चिन्मय स्वरूप प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम हैं कौन। What is the identity of this spiritual soul, spirit soul? ये जो जीव है, ये जो चिन्मय जीव है, उसकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है? That here in the purport, Srila Prabhupada writes, the servants of God, they cooperate with him in every respect. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किस तरह से जो भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, उनके साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। In introduction of Bhagavad Gita, there Srila Prabhupada, he calls the spirit soul the cooperator. भगवान श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के प्रस्तावना बताते हैं किस प्रकार से जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप है कॉपरेटर, सहयोग करने का। That's our relationship with God, with Krishna. ये हमारा संबंध है भगवान कृष्ण। We cooperate with Krishna. हम भगवान के साथ सहयोग करते हैं। But to understand that our spiritual relationship with Krishna, भगवान के साथ हमारा जो आध्यात्मिक संबंध है उसको जानने के लिए we must first receive knowledge of that relationship. हमें उस संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। Knowledge of our relationship with Krishna is called Sambandha Jnana. भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, उसको जानने की जो पथ है उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। And once you have the knowledge of that relationship from the spiritual master, you can act in that relationship with Krishna. जब आप अपने आध्यात्मिक गुरु से इस संबंध के बारे में जानते हैं, तो आप उस संबंध में भगवान की सेवा कर सकते हैं। That is acting as a spirit soul. वो क्या है? एक चिन्मय स्वरूप के रूप में। And thus acting as spirit soul is called Abhideya Jnana, how to act in a relationship with Krishna. और किस तरह से उस संबंध को जानते हुए सेवा जो करना है, उसको बोलते हैं अभिधेय। And if we act in relationship with Krishna in devotional service,
It will purify and elevate our consciousness as we discussed yesterday. और जब हम इस संबंध को जानते हुए भगवान की सेवा करते हैं, भक्तिमय सेवाएं करते हैं, तो उसको And we will come to the point of prayojan, attaining the goal of life. इन तरह से हम जब सेवा करते हैं तो हम अपना जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रयोजन. How to attain that goal of life that is contained in prayojan jnana. किस तरह से हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्रयोजन ज्ञान बोला जाता है. So these are three important subjects we must learn in order to act in relationship with Krishna. ये तीन चीजों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, संबंध, प्रयोजन और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. इस तरह से हम जब जानते हैं तो हम सही रूप से भगवान को जान सकते हैं. And if we act in relationship with Krishna, that will purify the heart. और जब हम इस तरह से भगवान के संबंध में सेवाओं को करते हैं जानते हुए, तब ये हमारे चित्त को शुद्ध करता है. How to learn these three aspects? कैसे हम ये तीन जो विषय हैं उनको जानें? This sambandha jnana, this abhideya jnana, and this prayojan jnana. ये संबंध ज्ञान, प्रयोजन, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान. This is only described in one scripture. ये एक अध्याय में बताया गया है. The Bhagavad Purana, भागवत पुराण, Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम. That in Srimad Bhagavatam is described that at the end of Dvapara Yuga, the previous age, great sages of Namisaranya were performing 1,000-year sacrifice. भागवत पुराण में आता है कि किस प्रकार से हजारों साल तक एक यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा था. They were performing this sacrifice out of compassion for the people in Kali Yuga, which was appearing at that time. ऋषि मुनि ये यज्ञ कर रहे थे सभी लोगों के कल्याण के लिए. उनको कलयुग के जो जीव हैं उनकी भयावह स्थिति को देख के उन पे दया आई, तो उन्होंने ये यज्ञ का आयोजन किया. They discussed the question, Kali Yuga is starting and Krishna has left this planet. वो ये प्रश्न चर्चा कर रहे थे कि कलयुग कितना भयावह है और आप भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़ के चले गए हैं. Where should we take shelter now? हमें इसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए. And Sutta Goswami replied, Krishna tvadamapagate dharma jnana dipisa kalinastati samisha puranarko dunodita. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण स्वधामोपगते. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये एक सूर्य के समान है, तेजमय तेजस्वी सूर्य के समान है. And it has arisen just after the departure of Lord Krishna. और ये भगवान श्री कृष्ण के तुरंत जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है. That he departed for his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. भगवान स्वधामोपगते अपने धाम चले गए हैं, ये ज्ञान, धर्म आदि के साथ. Persons who have lost their vision जो व्यक्ति अपने दृष्टि को खो चुके हैं due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali इस कलयुग के गहन अंधकार में shall get light from this Purana. वो जीवन प्राप्त करेंगे इस पुराण के माध्यम से. So there are in the Vedic literature 18 major Puranas. In the Vedic literature there are 18 major Puranas. वैदिक साहित्य में 18 महत्वपूर्ण पुराण हैं. There are 6 Puranas to help elevate the consciousness of those in a mode of ignorance.
6 पुराण ऐसे हैं जो तमोगुण में स्थित लोगों को सतोगुण की स्थिति तक लेके आते हैं। There are 6 Puranas for those in the mode of passion. 6 पुराण ऐसे हैं जो रजोगुण के व्यक्तियों के लिए हैं। And there are 5 Puranas for those in the mode of goodness. 5 पुराण ऐसे हैं जो सतोगुण में हैं। And there is one Purana, the highest Purana, which is transcendental. और एक पुराण है, छठा पुराण, वो दिव्य है। This Purana is the Srimad Bhagavatam. ये जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। This Srimad Bhagavatam describes in detail this process of Sambandha Jnana, Abhideya and Prayojan. और ये जो छठा पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इन तीनों को समझाता है। The Sambandha Jnana gets 3 factors which are very important. संबंध ज्ञान में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। That first, one must, to know oneself, one must know first who Krishna is. अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। That's a very important point, otherwise you cannot know yourself. ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप को जानने के लिए। In Bhagavad Gita, the conclusion of Bhagavad Gita, Krishna says that there is confidential knowledge, more confidential knowledge, and most confidential knowledge. भगवद गीता में 3 तरह के ज्ञान बताते हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। It first starts with confidential knowledge. पहले वो कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। That's Brahma Bhuta Pashanatmana Shostina Kamsati Samasavesha Bhutya Mad Bhaktim Bhate Brahma. Krishna in 1854, I think, he says that yes, the confidential knowledge is that we are Brahma Bhuta, we are spirit souls. सबसे पहले 18 अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो सबसे जो गुह्य ज्ञान है वो ये है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो जीव है वो ब्रह्म है। And Brahma Bhuta means the spiritual platform, the platform on which we understand that we are a soul. ब्रह्मभूत का अर्थ होता है आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को आत्मा के रूप में जानना। When can you understand this? हम ये कब समझ सकते हैं? When you are Prasannatma, completely peaceful. जब आप प्रसन्न आत्मा है, आनंद, पीसफुल है। But to be completely peaceful, your heart must be fully purified first. आपको अगर जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। What does it mean that the mind is purified? इसका क्या अर्थ होता है कि मन शुद्ध है? Na shoshti na kankshati. ना सोचती ना कांक्षती। One does not lament, and one does not lament, and one does not hanker for anything. ना सोचती ना कांक्षती, ना शोक करता है ना कांक्षती, ना इच्छा करता है। ये है आध्यात्मिक स्तर। When we lament, your consciousness is going to the past. जब हम शोक करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो पूर्व में चली जाती है, भूत में चली जाती है। And when you are hankering, your consciousness is making plans for the future. It's going into the future. जब हम कांक्षा करते हैं तो हमारी इच्छा करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो भविष्य में चली जाती है। And you lose the present. और आप जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसको भूल जाते हैं। And the presence is the only thing that we have. और वर्तमान ही वास्तव चीज है जो हमारे पास है। And we can test. You chant japa. आप जप करते हैं। And your mind tells you, oh, this person said this bad thing about you yesterday. जब आप जप करते हैं तो इस समय आपका मन चला जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे को इस तरह से गलत शब्द बोले थे।
Or your mind says you have still so many things to do और today. नहीं तो मन ये बोलता है नहीं अभी आपको बहुत सारी चीजें और करनी है, You have to do this, that, that. आपको ये करना है, वो करना And है, वो there's करना this problem and that problem you have to deal with. है, इस समस्या को सुलझाना है, उस समस्या को सुलझाना है, And we lose the present. और हम वर्तमान को खो देते हैं. So this going to the future and to the past is due to our attachment. ये जो भूत और भविष्य में रहना, ये वास्तव में हमारे अटैचमेंट का कारण है. So when you chant japa, you leave this at home. You leave this at home when you chant जब आप जप करते हैं japa. तो इसको Put it off. रूम पे रख के आइए, बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, And you concentrate on the holy name. और आप भगवान के नाम पे And focus कीजिए. when it wanders to the past, to the future, you have to bring it back. जब मन भूत और भविष्य में जाता है तो उसको वापस लेके आना चाहिए. It's very difficult. ये बहुत कठिन है. Unless your mind becomes attached to Krishna, it cannot be detached from things in this world. जब तक हमारा मन भगवान से आसक्त नहीं होता है, तब तक हम अन्य चीजों की आसक्ति को नहीं त्याग सकते हैं. But more confidential knowledge, Krishna लेकिन जो says, गुह्यतर ज्ञान है, Ishvara sarvabhutanam richya yunatishati brahmayam sarvabhutanam yantrudradi mayaya. This is 1861. Krishna says, I'm situated in the heart of every living entity. गुह्यतर ज्ञान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्चिष्यति. किस प्रकार से मैं जो हूँ वो सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ, परमात्मा के रूप में. So he's situated in the heart of everyone, and he's conducting the wanderings of all living entities, all the activities of the living entities. तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं और उस सभी जीवों की ये जो भौतिक जीवन में भ्रमण कर रहे हैं एक जगह से दूसरे, वो उसको भगवान देखते हैं और उसको निर्देशित करते हैं. The living entities were seated in a machine, a yantra, made of biological material energy. जो जीव है वो एक ऐसे यंत्र पे बैठा हुआ है जो कि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है. So the first level was confidential knowledge, पहला जो स्तर था वो गुह्य ज्ञान था, which helps us to realize that we are not a body. पहला स्तर है कि हम ये शरीर नहीं है. This level will realize us ये जो that, स्तर है हमें महसूस कराता है that Krishna is the controller of the material energy. कृष्ण जो है वो इस भौतिक प्रकृति के नियंता है. He, Brahman, is energy, ये ब्रह्मांड है, ये भगवान की शक्ति है. but Paramatma in the heart, Krishna in the heart, is personal expansion in this world that controls the material energy. और परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान का एक्सपेंशन है, अंश है, जो कि इस भौतिक सृष्टि को नियंत्रित करते हैं. Bhagavad Gita chapter 6 explains Astanga Yoga. चैप्टर 6 भगवद गीता का हमें अष्टांग योगा के बारे में बताता है. What's the purpose of Astanga Yoga? अष्टांग योग का क्या उद्देश्य है? Siddhatmana prasantasya paramatma samaita. It's, I think, 6-7. Yeah. The Krishna explains that Chitta Atmana, when one controls the mind. भगवान छठे अध्याय 7th श्लोक में बताते हैं जीत आत्मना, कैसे मन को विजय किया जाए. So this Nashosi Nakanksata is not there anymore. उसमें वहाँ सोचती और कांक्षती उसमें नहीं है. And Chitatmana Prasantasma, one becomes peaceful. जितात्मना प्रशांतात्मा, one become peaceful. एक जो व्यक्ति है वो शांत हो जाता है. That's the mode of goodness. ये सत्वगुण का लक्षण है. Then Paramatma Samaita, one reaches the super soul.
परमात्मा समाहिता, तब वो परमात्मा को समझ सकता है। It's nice, and the super soul is in the heart, and Krishna is controlling material energy. यह अच्छा है कि भगवान जीव के हृदय में रहते हैं, वो भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। You don't control your heartbeat, Krishna controls. आप जो है आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि कौन कंट्रोल करता है? कृष्ण करते हैं। You don't control your digestion, Krishna controls that. आपके जो पाचन शक्ति है उसको कौन नियंत्रित करता है? आप नहीं करते हैं, कृष्ण करते हैं। He's the fire of digestion. ये जो है ये जटाग्नि है। And Krishna, he says, Sarvashtam Radishana Vishta Matasmiti Jnanam Apahamsa. I'm seated in everyone's heart and I give them remembrance, knowledge, forgetfulness. भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जिस प्रकार से मैं जीव के हृदय में बैठा हुआ उनको रिमेम्बरेंस, याद रखना, फॉरगेटफुलनेस, स्मृति, विस्मृति और ज्ञान, तीनों चीजें देते हैं। So whatever you remember, whatever you forget, it's due to Krishna. जो आप याद रखते हैं या जो आप भूल जाते हैं वो भी आप नियंत्रित नहीं करते, कौन करता है? He controls the subtle body. वो भगवान जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी नियंत्रित करते हैं। It's nice, the yogis come in contact with the super soul, and then what happens then? जो योगी लोग हैं वो सुपर सोल परमात्मा के संपर्क में आते हैं और They realize Mayadrakshana Prakriti, the super soul, is the controller of material nature. तब जो योगी हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण है वो इस भौतिक प्रकृति के नियंता है, मायादक्षिण प्रकृति। And what is the result of their practice? और ये कैसे होता है? वो उनके अभ्यास से होता है। It's a waste of time. ये खाली समय की बर्बादी है। Krishna says, I'm the controller of material nature. Why not accepting it? भगवान तो भगवद गीता में सीधे बताते हैं कि मैं प्रकृति को नियंत्रित करने वाला हूँ, सबका नियंता हूँ, उसको भी सीधे ही ग्रहण कर लीजिए। The yogis may temporarily attain Brahman realization. जो योगी होते हैं वो टेम्पररी, क्षणिक समय के लिए उनको ब्रह्म का ज्ञान होता है। It feels good after millions of births. You get in a situation of complete peace. ऐसा कहा गया कि जो कई जन्मों के बाद पूर्ण शांति प्राप्त होती है। And it feels good after millions of births of suffering. और इस तरह से उनको कई जन्मों के कष्टों को प्राप्त करना पड़ता है। But after so million years in a Brahmajyoti, you think it's boring here, nothing to do. और जब इस तरह से कई जन्मों तक इसका प्रयास करने के बाद में यही समझ में आता है कि ये सब जो है वो वास्तव में बोरिंग है, उतना अच्छा नहीं है। And one cannot go to the spiritual world. और वो आध्यात्मिक जगत भी नहीं जा पाते। Because to go to the spiritual world, you have to reactivate your spiritual body. आपको अगर आध्यात्मिक ध्यान जाना है तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कार्यान्वित करना पड़ेगा। What is needed to go to the spiritual world? ये चीज चाहिए हमें आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। 1154, Krishna says, in many verses, but in 1154 Krishna says, O Arjuna, that one can only realize me as I'm standing before you by ananya bhakti, by pure devotional service. भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं कि मैं जिस रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ उस रूप में मुझे जानने के लिए सिर्फ अनन्य भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। Because the yogis, they must come to that point. जो योगी हैं उनको इस स्तर में आना पड़ेगा। Bhaktaram saratapasam sarvalokmaishvaram sudam sarvabhutyam katkamam santim richati. One must come to the point of understanding that Krishna is the owner of everything and therefore the enjoyer of everything. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोकमस्तम, किस प्रकार से ये भगवान सर्व यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं,
ये चीज जानने पे ही शांति पृष्ठ शांत वास्तविक शांति प्राप्त होती है. So if the yogi does not come to the point of understanding that this Paramatma is an expansion of Krishna, जो योगी हैं अगर वो इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि जो परमात्मा है वो वास्तविक नियंता है, the whole this practice is wasted. तो उनका जो सारा जो प्रयास है वो खाली समय की बर्बादी है. Because then he must come to the higher yoga, the bhakti yoga. क्योंकि उसको उसके बाद उनको भक्ति योग जो कि उच्च स्तर का योग है उसको करना पड़ता है. So after giving the more confidential knowledge in Bhagavad Gita, Krishna gives the most confidential knowledge. भगवान भगवद गीता में गुह्यतर ज्ञान देने के पश्चात गुह्यतम ज्ञान के बारे में बताते हैं. What is the practice that re-establishes our relationship with Krishna? ऐसा क्या अभ्यास है जो हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है? Is manmana, you think of me, Krishna says. वो क्या है? मन मना, मेरे बारे में चिंतन करो. And if you always think of me, bhavamat bhakto, then you become my devotee. अगर तुम मेरा हमेशा चिंतन करते हो तो तुम मेरे भक्त बन जाओगे. And what do you do if you become Krishna's devotee? अगर आप कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? Majjayi, then you start to worship him. तो आप मत जाइए मतलब मुझे मेरी पूजा करोगे. That mam namaskari, offer one's obeisances. और क्या करेंगे? Offer obeisances, भगवान को नमस्कार करेंगे. So what is explained now in this verse of the Bhagavatam लेकिन ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है is the process by which we realize this sambandha jnana. इस श्लोक में बताया गया है कि हम अपना जो संबंध ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं. And to realize this knowledge, you must do two things that are explained in this तो verse. इस श्लोक में दो चीजें बताई गई हैं अगर आपको अपना संबंध ज्ञान भगवान के साथ स्थापित करना है. Shushrushu shadadanasya, one must hear. तो दो चीजें बताई. शुश्रूषो श्रद्धानस्य मतलब सुनना. With great attention. With great attention, ध्यानपूर्वक. Yeah. सोते हुए. So, Sushtu Shadadanasya. Shadadanasya is translated here by Srila Prabhupada not as faith, but it translated as hearing with care and attention. तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है. श्रद्धानम को प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? श्रद्धा के साथ नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है? बहुत ध्यानपूर्वक. With attention, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए. But to hear with great attention, one must do another thing at the same time. Otherwise, one will not be able to assimilate the knowledge. अगर कोई ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है तो वो जो ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा. Assimilation of the knowledge is not done on an intellectual platform. जो ज्ञान को ग्रहण करना होता है वो बुद्धि के स्तर पे नहीं होता है. Krishna says in Bhagavad Gita 10:10, Dadami buddhi yogam tam. I give you this realized knowledge. भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको एक रियलाइज्ड नॉलेज. रियलाइज मतलब मतलब समझ गए. रियलाइज नॉलेज. Yeah. But because one must do a second thing in this serve the spiritual master. और दूसरा क्या बताया गया है? अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना. Tatvina pariprasna sevya pradakshante yam jnanas tattvadarshana. So one must serve the spiritual master with humility and ask questions about spiritual life. तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के पास बहुत विनम्रता से जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और तत्पश्चात उनसे प्रश्न पूछने चाहिए. And then the Bhagavatam says further in, I think in 177, there Narada Muni said, and then you will become free from all lamentation, fear and illusion. Illusion and fear. Lamentation, illusion and fear. So, ये 177 फर्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर 7 वर्स में बताते हैं
नारद मुनि किस प्रकार से शोक मोह भयावह, कि जब कोई इस तरह से आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है तो वो शोक, लैमेंटेशन, मोह, इल्यूजन और भय, फियर से मुक्त हो जाता है. My Varta Dakshaka guru, the first guru I met, was Vishnu Goswami, the old Gujarati guru, devotee, Prabhupada disciple from Gujarat, from Dwaraka. You first met. Yeah. तो महाराज बता रहे हैं किस प्रकार से वो पहली बार महाविष्णु स्वामी, जो कि यहाँ भारत में गुजरात के हैं, श्री प्रभुपाद शिष्यों से मिले थे. Yeah, he was living in London. वो उस समय लंदन में रह रहे थे. And he came to Flanders, and I heard his first instructions and I never forgot them. और उन्होंने मुझे एक पहला इंस्ट्रक्शन दिया था जो कि मैं कभी नहीं भूला. He said, "You do SSI and you get LIF." उन्होंने बताया कि आप SSI करो तो आपको LIF F मिल जाएगा. Submission, service and inquiry you do to the spiritual master. पहला क्या होता है हमें? सबमिशन. ये मोबाइल बंद कर लो, ध्यान नहीं से सुन नहीं पा रहा हूँ. सबमिशन और उसके बाद सर्विस और इंक्वायरी, SSI. Yeah. And then you get LIF. You get free from lamentation, illusion and fear. और तब क्या होगा? जब आप SSI करेंगे तो आपको LIF मिलेगा. LIF मतलब lamentation, illusion and fear. So, if you serve the spiritual master nicely and at the same time hear this Bhagavatam, अगर आप अपने आध्यात्मिक गुरु की अच्छे से सेवा करते हैं और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं on a daily basis, नियमित रूप से, then what will happen? तो क्या होगा? You will get taste for spiritual life. हाँ, तो आपको आध्यात्मिक जीवन के लिए रुचि आ जाएगी. And Krishna speaks how he reciprocates with that if you do that. और भगवान कृष्ण बताते हैं अगर आप इस तरह करते हैं तो भगवान आपसे कैसे आदान प्रदान करेंगे. Shinvatasvakata Krishna Punyashravana Kirtana Ridyantato Yabhatani Vidinots Richitam. I from within the heart, seeing that my devotee becomes attracted to hearing about me, I start to purify his heart from all unwanted things, all this passion and ignorance. I remove Krishna. इस तरह से आप अगर अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं और श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक नियमित रूप से सुनते हैं तो भगवान आदान प्रदान कैसे करेंगे? बोलते हैं मैं आपके हृदय में जितना मल है उन सबको नष्ट कर दूंगा, धो दूंगा. So this purification of the heart is the process that brings us first to Brahman realization and then to Paramatma and Bhagavan realization. ये जो चित्त की शुद्धि है ये क्या है? ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन. तो भगवान को जानने के स्तर तक ले जाता है. But you must do these two things together. लेकिन इसमें आपको दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उनको साथ में करना है. You may everything forget what I said, but what I'm going to say now, you must remember for the rest of your life. आप पूरे जो मैं क्लास में बताया हूँ हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ दो चीजें उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है. Srila Prabhupada said, why do I write these books? Why in the middle of the night am I translating these books? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मैंने ये पुस्तकें क्यों लिखी, क्यों रात भर जाग करके मैंने इन पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया. It's for you to read. ये मैंने किया आप लोगों के लिए, जिससे आप इसको पढ़ें. If you do not read them, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, Guru Avakya, you are offending the Guru. तो आप गुरु अवज्ञा, गुरु का अपमान कर रहे हैं. So because by reading the Bhagavatam daily, श्रीमद् भागवतम नियमित रूप पढ़ने से we get the realization of the Sambandha Jnana. क्योंकि जब हम भागवत डेली पढ़ते हैं तो हमें संबंध ज्ञान का पता चलता है.
and we get a proper inner attitude और हमें वास्तविक मनोभाव क्या होना चाहिए to avoid the 10 offenses we chant we recite every जब morning. भगवान के नाम का जप करते हैं उसमें जो 10 अपराध होते हैं उनको कैसे नहीं किया जाए And that helps us to overcome these offenses. तो उससे क्या होता है हम ये जो अपराध हैं उनसे बच पाते हैं Because these 10 offenses are about disrespect. ये जो 10 अपराध हैं ये अवज्ञा इसका मूल कारण है Disrespect towards the holy name. हरि नाम के प्रति अवज्ञा Not knowing who Krishna is. Not knowing who Krishna is. ये नहीं इसका ज्ञान नहीं होना कि कृष्ण कौन है That we realize by hearing the Bhagavatam. और ये हमें कैसे पता चलेगा कृष्ण कौन है भागवतम पढ़ के Disrespect for the instructions of the spiritual masters. आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों की अवज्ञा करना If you chant and hear the Bhagavatam daily and follow the four relative principles, you follow nicely the instructions of the अगर spiritual आप masters. नियमित रूप से 4 नियमों का पालन करते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो आप सही रूप से गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं So this disrespect against the devotees. और नेक्स्ट है भक्तों के प्रति अवज्ञा करना You learn from the Bhagavatam what being a devotee, what it means. तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक भक्त होना उसका मतलब क्या है And you will be able to discriminate who is advanced, who is not तब advanced. आप भेद कर सकते हैं कौन उन्नत है कौन उन्नत नहीं है So it helps to come to the proper attitude for chanting. अगर हम इस तरह से भागवत पढ़ते हैं तो हमें सही मनोभाव पता चलेगा कि जप कैसे करना है Trinadapi Srisnana, Taroravi Saisnana, Amana Manadana Kirtanya Sudari. So one should chant in a humble state of mind. तो हमें पता चलता है इस प्रकार से जो जप है वो बहुत हमें humble state of mind अपने More tolerant than a tree. more tolerant than a tree पेड़ से सहिष्णु होना Being devoid of all prestige. बिना मान की आशा किए हुए Mana Manadana and giving respect to all और others. सबको सम्मान देना In such a state of mind, one can chant the holy name अगर constantly. कोई इस तरह का मनोभाव रखता है तभी वो भगवान के नाम का जप कर सकता है So that is what the Bhagavatam does. तो ये जो है श्रीमद् भागवतम में सिखाता है We chant daily the Hare Krishna mantra, but we should daily also read Bhagavatam. हमें डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करना ही है परंतु उसके साथ साथ नियमित रूप से भागवत भी पढ़ना है If you read every day 10 verses and purport, अगर आप पढ़ते हैं जो श्रीमद् भागवतम के वर्ष और उनके तात्पर्य हैं in 4 years time, you will read the entire Bhagavatam. तो आप 4 साल में पूरा भागवत पढ़ लेंगे But this is very important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है Prabhupada has put it as a part of our morning program. प्रभुपाद ने हमें It's a part of our morning program, hearing the Bhagavatam. प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हुआ है पूरा जिसमें भागवतम पढ़ना भी है That's Prabhupada said many times, if I've no qualifications, everything is happening due to the mercy of my Guru Maharaj. प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी कोई योग्यता नहीं है परंतु जो भी हो रहा है वो मेरे गुरुदेव की कृपा की वजह से हो रहा है But if I've one qualification, he अगर said, मेरी कोई योग्यता है I was eager to hear. मेरी अगर कोई योग्यता थी तो वो क्या थी मैं सुनना चाहता था To hear the Bhagavatam, to hear the words of the spiritual master. भागवतम को सुनना और अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को सुनना So that's important. We want
taste in spiritual life. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुचि आएगी। And it comes by that combination. तो ये जो रुचि कैसे आएगी, ये जो दोनों के सहयोग से आएगी। Nas presa Bhadra Nityan Bhagavata Sevya Bhagavata Uttamasaki Bhakti Bhagavati Nasiki, by a regular attendance of the class of the Bhagavatam every day. भक्ति में हमें रुचि कैसे आएगी? नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करने पर, And by rendering service to the devotees. और भक्तों की सेवा करने से। All that is troublesome to the heart, this lamentation, this hankering, जितने भी अनर्थ हैं हृदय में, lamentation और hankering, will be nearly completely destroyed. जो ये हैं, ये लगभग हृदय से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Any question? ठीक है, सभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में। Yes, please. Thank you so much for this wonderful class. Like you told me daily. अभी बैठे रहिए, कुछ काम है जाने का? Is there some urgency? Today is holiday, na? Just sit properly. Yes. So Maharaj, like you take vow just to chant daily, and but you this is like along with chanting we should also do book reading daily. I mean, like for myself, even like when I take vows, but somehow or other, like some days I could not complete for the book reading or I skip. So I mean, I know the importance of reading books, but still I don't know like why it happened. Like how can you overcome it? अभी प्रश्न समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? आ गया? Yes. It's a question of putting priorities in your life. That priorities. ये निर्भर करता है कि आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है किस चीज की। If making spiritual progress is your priority, then this should be your priority. अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक जीवन जो है वो प्रायोरिटी पे है, प्राथमिकता पे है, अगर आध्यात्मिक जीवन प्राथमिक है तो आप उसके लिए समय निकालेंगे। Sometimes it may be difficult to practical situations. कई बार ये कठिन हो सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस के आधार पे। But you are busy with cooking or cleaning, and you hear Prabhupada's lectures. तो आप अपना जो नियमित कार्य है, मान लीजिए कोई कुकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस समय भी प्रभुपाद के लेक्चर सुना के सुन सकते हैं। With all the lectures of Prabhupada. मेरे पास एक छोटा सा यंत्र है जिसमें से प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स हैं। If I've cooking or I have to do things, practical things, I'm always hearing. Even in the Bhagavatically, verse after verse. अगर कोई नियमित रूप से भागवतम पढ़ता है सही रूप से, एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष लगातार। Because the Bhagavatam is structured systematically, so that you gradually your consciousness becomes elevated. तो भागवतम बहुत अच्छे से लिखी गई है, एक बहुत सिस्टमैटिकली एक के बाद एक। तो जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमें कैसे भक्ति में उन्नति करना है, कैसे चेतना को शुद्ध करना है, वो हमें सीखने को मिलता है। The second and the third canto is explaining the creation, how Krishna is connected with the creation. दूसरा और जो द्वितीय जो स्कंद है उसमें बताते हैं ये सृष्टि कैसे हुई है, भगवान इस सृष्टि से कैसे जुड़े हुए हैं। And then further we hear about histories of many devotees who went through difficulties and surrendered to Krishna and what they went through. फिर उसके बाद आगे के स्कंद में बताया गया किस प्रकार से भगवान के भक्तों ने उनको शरणागति करी, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा करी। And we hear from Lord Kapila Dev, King Rishabhadev, the basic principles of how to practice devotional service. और उसके बाद कपिल देव की शिक्षाएं आती हैं जिसमें बताते हैं कैसे हम भक्ति को अभ्यास करें अपने जीवन में। In the sixth canto, we hear about Ajamil and the importance of the chanting of the holy name. षष्ठम स्कंद में हम सुनते हैं अजामिल की कहानी और कैसे
नाम की शक्ति के बारे में सुनते हैं। In the seventh canto, we have a role model of Prahlad तो Maharaj. सातवें स्कंद में हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, ये जो एक भक्ति के रोल मॉडल है। In the eighth canto, we hear the importance of surrender to Krishna. आठवें स्कंद में हम पढ़ते हैं कथाएं भगवान की शरणागति के बारे The dynasties in which Krishna is going to appear. नाइन्थ स्कंद में हम पढ़ते हैं भगवान रामचंद्र के बारे में और भगवान कृष्ण भी जिस वंश में आए हैं उनके पूर्वजों के बारे में। And if we have learned all these things, how to surrender to Krishna, how to become a devotee and get rid of our contamination, then we can start to understand Krishna in the 10th canto. जब हम ये 9 स्कंदों में ये पढ़ लेते हैं कि भगवान कौन है, उनका सृष्टि संबंध क्या है, उनको शरणागत कैसे हुआ जाए, ये सब पढ़ने के पश्चात हम लास्ट में 10वें स्कंद में भगवान के बारे में पढ़ते हैं। Then we can learn about prayojan, the goal. गोल जो हमारा लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। That. So, therefore it's important to study that. The Srimad Bhagavatam is Krishna appearing in Kali Yuga. श्रीमद् ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। भगवान कलयुग में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए हैं। So, that's what Srila Prabhupada instructed us. There are 2 tracks, the chanting and hearing of the Bhagavatam. श्रील प्रभुपाद ने हमें निर्देश दिया है, ये 2 पहिए ट्रैक, सुनना और सेवा करना। And we should learn from the Bhagavatam from devotees who have realized the Bhagavatam. और भागवतम में कैसे सुनना चाहिए और भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए जिन्होंने वास्तविक रूप से भागवतम को अपने जीवन में आत्म साक्षात किया है। As much as possible, serve advanced devotees and hear from them. ये तब होगा जब हम नियमित रूप से Maharaj, Bali Maharaj and so many others, they have attained love for me by associating with my pure devotees. तो उद्धव जी उसमें बहुत सारे भक्तों के नाम बताते हैं, प्रहलाद महाराज, किस प्रकार से ऐसे भक्तों का संग करके जो भक्ति है उसको जीवन में ग्रहण किया। But you begin your devotional life by associating with Prabhupada through his purports of the Bhagavatam and Bhagavad तो Gita. इसी तरह हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, प्रभुपाद के शब्दों को, प्रभुपाद के शब्दों या उनके निर्देशों का संग लेके उनकी पुस्तकों के माध्यम से। That's the best service you can render to Srila Prabhupada. ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा होगी जो आप श्रील प्रभुपाद की कर सकते हैं। To read his books, इन पुस्तकों को पढ़ के that devotees shall ask Prabhupada, what pleases you the most? एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपको क्या सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करेगा? Srila Prabhupada said, what pleased me the most is that when you are becoming a pure devotee of Krishna. मैं तब सबसे संतुष्ट होऊंगा, सबसे ज्यादा संतुष्ट होऊंगा जब आप एक शुद्ध भक्त बन जाएंगे। Therefore, reading his books is of utmost importance. तो ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं इनको पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। So please make it a priority. तो कृपया करके इसको अपने जीवन में प्राथमिकता It दें। doesn't take long every day to read a few verses and a purport. ये इतना ज्यादा समय नहीं लगता है कि अगर हम नियमित रूप से 1-2 श्लोकों को पढ़ेंगे तो। Is that okay? Good. Thank you. Good, we are over time, I think. We will continue this evening at what time? At 7 o'clock. 7. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हम शाम को मिलेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पर्सनली महाराज से मिल सकता है और प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Good. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की